Good afternoon, friends. Jai Hind to one and all. My name is Navjot Singh, and I am a former officer of Intelligence Bureau. Having served in the Bureau for 5 years and qualified the exam twice, I will be sharing my strategy, the challenges in the job, and how to approach this examination in this video. I would like to thank Delhi Knowledge Track for giving this opportunity to share my point of view to the aspiring candidates. Friends, you must have seen that the Intelligence Bureau has notified 995 vacancies for selection into ACIO 2. So here I will try to share with you a few details, a few intricacies, a few problems that you are facing currently to apply for the examination and how to prepare for it. I have been getting very many queries from students about how to approach. So let's first understand about the notification and what are the intricacies therein. First of all, the major problem that students are asking about is the age limit. So friends, you can apply for the Intelligence Bureau exam if you are falling in the age bracket of 18 to 27 years of age. And the cutoff date for deciding that 27 years of age would be 15th of December 2023, which also happens to be the last date for applying for the examination. If you are not greater than 27 by that date or less than 18, you can definitely fill this form. In fact, you should fill the form because this will give you a great opportunity. Secondly, those students who are in the final year of their graduation, they may not be eligible to apply for the exam because the minimum eligibility criteria is graduation. So if you are not a graduate, you cannot apply for the form. Secondly, there are several queries from students about the height and other medical issues that are involved for the examination. So I would like to mention here, whenever you are applying for any examination, not just in the Intelligence Bureau, you should consider the notification as a very, very authentic document because it contains all the information that the Ministry of Home Affairs or any other commission wants to give to candidates who are applying for the exam. So, notification has not mentioned anything regarding the height criteria, and you should not bother about it. There is no strict height criteria in this, and in fact, I will like to share with you that even some of my colleagues did not satisfy the criteria that are there in the defense forces. For example, there were people whose height was less than 160 centimeters and they effectively are serving in the bureau. In the Intelligence Bureau, more than your physical agility, the agility of your mind is very, very much required. Friends, it is not just the power of the bullet, the power of the sword, or the power of the gun that saves the country. It is the power of the pen also, which will help us safeguard our internal security as well as the frontiers of our country. And in the Intelligence Bureau, you will definitely get a great opportunity to use that power of pen, your ability to analyze intricate data, to analyze security situations and propose a very, very methodical and a systematic solution to that problem. Coming back to again to the filling of the form, many students have been asking, sir, should we apply the form online or offline? Friends, the notification has clearly mentioned that you should fill the form only on the official website of Ministry of Home Affairs, that is mha.gov.in, or the website of NCS, National Career Service. Apart from these two websites, you should not fill the form in any other source, any other website or offline. It will not be entertained. Also, you may come across certain people posing themselves as ex-intelligence officers, and they will tell you that we will get you selected in the organization. Friends, it is a caution to you, please don't fall for those traps because they are going to lure you and they will waste your money. Don't fall for that. Only fill the form there in the official website and try to just focus, because see, you don't become an officer after clearing the examination. You have to imbibe those qualities of being an officer even before qualifying. So you should fill the form on the website itself, and you should not converse or listen to any people who are luring you into certain uh, objectionable practices. And in fact, I would go on to as further to say that the examination process of Intelligence Bureau is very, very transparent. Your merit will be rewarded, and if you are studying hard, if you are prepared well, I have no doubt in saying that you will
definitely qualify the examination. All right, friends. And there are certain issues about medical issues people are saying. One of the students, he mentioned that, sir, I have an ACL surgery. What about the eyesight, sir? What are the other? I have thyroid issues. So friends, let me make it very clear. The medical fitness criteria is not as strict as the Indian Army or the Indian Air Force. Here, the medical criteria is a little relaxed, provided the only condition that you should not be having problems in performing operational tasks. See, this is an executive cadre of the Intelligence Bureau. Even I have served in the Intelligence Bureau executive cadre for about 4 to 5 years, about half a decade. So I can surely tell you, you need to be a firm mind and firm body, and other minor medical issues are not going to bother. The medical will definitely not be a problem. About the eyesight also, people have been asking, so if you are 6 by 6, 6 by 9 or 6 by 12, and even you use spectacles, even in that case there is going to be no problem, because you are not required the eyesight level of an Air Force fighter pilot. Here the relaxations are a little bit more. So these were a little intricacies that were involved about filling the form, about eligibility criteria, about how you can approach for the examination. Also, please make sure that you don't fill the form towards the very end. Try to fill it as soon as possible. Don't wait for the last date. Sometimes the servers are not working, so that will, you should not lose the opportunity to appear in this examination by a silly mistake of waiting till the very last. Get your documents correctly compiled and uploaded in the correct format, so that there is no rejection of your forms, right? So this is about filling the form and approaching the examination. Now, some students have also asked, sir, when is the exam going to happen? So the exam is most likely to happen in the middle of February. See, the correct intimation and date of examination can only be notified by the Ministry of Home Affairs official website. So that should be your only source of information. I can only give you a rough idea out of my experience. I can never give, nobody for that matter, can you give you an exact date when the exam is going to happen. So don't worry, the exam is going to happen on time, and you should start preparing right now. Don't think about many other things that people are telling you that you need this, you need that. Just focus. First thing, fill the form correctly and on time. Secondly, start preparing from day one without wasting the time. So that is should be your number one priorities. So now let's try to understand the requirements of the exam, the pattern of the exam, how we can approach about the exam. So friends, this is one of the most prestigious jobs that you can get into, because Intelligence Bureau is a very, very unique service. Getting into this, you really will get exposed to such challenges and opportunities that you may not have seen otherwise. So this exam is a three-stage exam. The first stage is an objective type examination. The second stage is a descriptive essay type paper. And the third stage is your personality development test or your personal assessment. So the first stage, it is an objective type exam of 100 questions. You are supposed to answer 100 objective questions in 1 hour. There will be 5 sections. First section will be general awareness, then general studies, then quantitative aptitude, then logical reasoning, and finally English language comprehension. So friends, let's understand each step by step. First of all, general awareness. So in general awareness, you are supposed to know the current affairs of national and international importance. At least you should cover current affairs of last 1 year, from January of 2023 to December of 2023 and onwards till the exam is conducted. Don't just ignore this aspect, because current affairs is going to be really, really important in your journey to qualify this examination. For the sources for current affairs, you can refer to any monthly magazine or yearly compilation, and make short notes of that. On the other hand, I am also trying to help students in this. You can also refer to individually contact me, where I will try to guide you also. That will be an approach where I will tell you how to approach, and I might try to start some current affairs classes for students for the benefit of students. Apart from that, you can also need to understand about eminent personalities, about different awards and honors that are given: Nobel Prize, Booker Prize, Dada Saheb Phalke Award. All these trivial informations आपको ये भी याद करना है. You have to understand these informations. आपको ये अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उसके बाद आप करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को अच्छी तरह से अप्रोच कर पाएंगे. So the crux for this matter is follow any one source. Don't follow too many sources. एक ही source follow करना है आपको.
जिसको आप बार बार रिवाइज करना है एग्जाम से पहले. See, you have 2.5 months probably before the examination. So you should try to cover your entire yearly current affairs by the end of December, and after that start revising. That will ensure you an edge over the others. Now let's come to the second section. The second section is the general studies section. So see, some students who had already been preparing for the examination, other examinations like UPSC, state PSCs, CDS and other examinations, they might have a rough idea about the general studies. So it will be relatively easy for them. I wouldn't say completely, but yes, they will have a slight edge. So the sections that include in the general studies are polity, we have history, you have economy, you have environment, you have science and technology, you have biology, you have other issues as well. So for polity, I would recommend you should study. There is only one book that is the best available source for polity. That is the book by Lakshmikant. Lakshmikant book is the Bible for the any polity related examinations. But there is a caveat. You need not read complete Lakshmikant for this exam. You need to be selectively prepared. You need to understand which topics are more important. For example, you need to emphasize on fundamental rights, fundamental duties, directive principles, preamble, about the parliament, Supreme Court, High Court, local bodies, and different organizations. You should lay more emphasis on these topics, but at the same time, you should also have a cursory idea. I will try to make a more detailed videos on this on my personal channel, where I will try to share some intricate details which is outside the scope of this video. So I'll try to go further on that. So secondly, after polity, you have history. So see, history, you should mostly focus on modern history. Modern history is to be read from one basic book. Either you're reading NCRT or you're reading one source, or I would recommend Spectrum. Spectrum is a book which covers modern history very, very good. It is a Spectrum publications by Rajiv Ahir sir, a retired IPS officer. So you can refer to that book. And even in that book, I would recommend you should focus more on post 1905 era, when the extremist phase of the nationalist movement started, and particularly the Gandhian phase. You should focus more on that, so that majority of questions are going to be asked in that area. Remember the governor generals, which governor general has served in which tenure, what are the acts that took place. For example, if we talk about Lord Curzon, you understand the Universities Act came, the partition of Bengal happened during his tenure. Like that, you have to understand which governor general introduced which policies. Lord Ripon, you must know that he was the father of local self-government. Similarly, towards the independence from 1940 to 1947, there came the different constitutional schemes about the handing over of the constitutional powers to Indian Constituent Assembly and Pakistan Constituent Assembly, like the Cabinet Mission Plan, June 3 Plan of Mountbatten, August Offer, Cabinet Mission, Cripps Mission. All these things you should be able to understand. Now, apart from the history, you have to understand economy. I suggest for this paper, economy will not be asked in that much detail. Economy, you need to have a basic idea. You can follow one NCRT, 12th class macroeconomics, or you can refer to any source which you have already read. But mark my words, refer to only one source. Don't multiplicate your sources. Just refer to one source and make it your Bible. Just revise it again and again. And this exam will require a cursory idea of economy only. Moving on, you have to refer to geography. See, geography, the understanding of geography will be very, very important for someone who is preparing for the bureau, because you will be serving in diverse terrains, and understanding of geography is kind of going to help you a little bit there. So I would recommend only one source here. You should study the NCRTs of class 11th. No need to refer even class 12 NCRTs. Just the two NCRTs of class 11, India Physical and Physical Geography, which physical geography will cover the basic concepts of geography like oceanography, climatology, geomorphology, your vegetation, all these things. And Indian geography will cover that in the Indian perspective. For example, India's natural vegetation, India's physiographic divisions, the Himalayas, the coastal plains, the Gangetic plains, and the mountains. All these things it will cover. So after geography, if you have to study science and technology or sciences, you should refer to 9th and 10th class NCRTs or any compilation. You can refer to Lucian compilations also for this, or Arihant, or any book, any one book for the science and technology, because here the questions will be a little more factual. For example, which cell has cell wall, plant cell or animal cell, cellulose, which cell has cellulose, and all these things related technical details
which cell has vacuoles, and then about the plant growth hormones, xylem, phloem, all these things, little information regarding that you will be requiring. All right. So after having talked about polity, history, economy and geography, and also science tech, I would recommend that you have a basic idea about international organizations. For example, United Nations and its sister bodies, World Bank, IMF, all these you should have an idea. At the same time, since it is an intelligence organization, you should know about the names and the headquarters of major intelligence organizations of different countries. For example, our internal intelligence organization is Intelligence Bureau. Our external intelligence is taken care of by RNAW, Research and Analysis Wing. Similarly, for Pakistan, we have the Inter-Services Intelligence, the ISI. For Israel, we have the Mossad. For the US, we have the CIA. We have FSB. We used to have KGB for the Soviet Union, the Russian Empire. Similarly, you also have to understand. See, यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है. आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के डायनामिक्स की काफ़ी अच्छे अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, नॉर्थ ईस्ट में किस तरह के चैलेंजेस हैं आपके, किस तरह की इंसर्जेंसी है, उनका क्रक्स क्या है. जैसे कहा जाता है, नागा इंसर्जेंसी इज द मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज. So what is the genesis of Naga insurgency? What is the current situation in Manipur? You have seen for the last 2 to 4 months, you have been seeing there has been a consistent, the Manipur is on the boil. It has seen mighties and cookies, and they have been in constant conflagration. Lot of lives are lost, and social order is in chaos. So you have to understand what is the basis, why these things are happening. Then India's border issues with other countries. For example, the LAC, the China's intrusions that are happening. Then we have the Myanmar border, how cross-border insurgency is happening. What are the challenges there? Then the challenge of illegal migration from Bangladesh, right? That you have to understand. Then about the left-wing extremism, how the genesis of left-wing extremism happened at the time of, how Charu Majumdar in Naxalbari district, how the genesis of left-wing extremism happened in Naxalbari district and started by Charu Majumdar, and how it has spread to other districts, and how it has become a problem for the security forces. You have seen many a times there have been ambushes on security forces by the Naxals, and how many of India's districts are affected. We have seen the Dandakarnya area where these Naxal affected areas, they straddle 2 to 3 states. So the challenges they face is, it is no particular state has control, and multiple jurisdiction pose a problem. Also, the TCOC operation launched by the Naxals, that also poses a lot of problems. So for that, if you understand this in a contextual manner, the core area of Naxal areas, and then the periphery and the sympathizers, how the government is trying to take different steps. For example, winning hearts and minds strategy, bullet for bullet strategy. And in Telangana and Andhra Pradesh, you have greyhounds that has been very successful in tackling these Naxal affected areas. Apart from that, how we need other schemes for development to bring people in the fold so that they don't go into the extremist activities. Similarly, for the Jammu and Kashmir militancy, what are the local challenges? What is the situation post 370 abrogation? And what is the historical situation? This thing you have to understand in entirety. So these are the things you have to approach. Apart from that, if you go into the quantitative aptitude, if your mathematics is decent enough, you practice a lot of questions. Take any one test series, practice that, or take any one book. R.S. Agarwal sir book is a good reference. You should not refer to it completely. Just try to understand the demand of the questions. किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, फिर उस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करें. तो मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, एक ही सोर्स रेफर करें और मल्टीपल उसके सेशंस प्रैक्टिस करिए. ठीक है. इसके बाद आप आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग. See, logical reasoning is one of the most easiest and effective ways to crack this examination. इसमें आपका क्लोज टेस्ट होगा, सिलोजिज्म होगा, ये सब चीज़ें होंगी. तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके भी हाई रिटर्न्स मिलेंगे. ऑलराइट. तो इसके लिए भी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें, बिकॉज इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर करने की बजाय अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उसमें से जो आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप अप्रोच करें. और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी टीचर की हेल्प लीजिए, अपने किसी सीनियर की हेल्प लीजिए. यू ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ पीपल अराउंड यू who are aware of logical reasoning and quantitative aptitude. And the final section in tier 1 is English section. In English, you have to understand, you cannot build your proficiency in English in a very short time. But I would recommend कि आप अपनी vocabulary को धीरे धीरे enhance करें. आप steps लें जिससे आप कुछ words को cram मत करें, उनको समझें. For example, close test होता है आपका. ग्रामर में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट स्पीच है, कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सब चीज़ें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें.
इसमें रेन एंड मार्टिन की बुक आपकी हेल्प कर सकती है, रेन एंड मार्टिन की बुक यूजफुल होगी। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज कोई दे रहे हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करके अपनी थोड़ी सी एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव कर सकते हैं। आप जो एडिटोरियल्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के, वहाँ से भी अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करें। आप डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, डेली अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें और क्वेश्चंस लगाएं बहुत ज़्यादा, उससे आपकी थोड़ा सा बैंडविड्थ बढ़ेगी। क्योंकि 2.5-3 महीने हैं तो आपको ये नहीं है कि हथियार नहीं डालने हैं, आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालें जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा एफर्ट कर सकें। अब देखिए ये था स्टेज 1। स्टेज 1 में आपके 5 सेक्शन थे, 20 क्वेश्चंस पर सेक्शन एंड टोटल 100 मार्क्स। अब जीएस और जनरल अवेयरनेस ये आपका 40 मार्क्स का आएगा और बाकी आएगा 60 मार्क्स का। तो आपको कोशिश क्या करनी है, जो सेक्शन जो 60 मार्क्स का है, क्वांट, लॉजिक और इंग्लिश है, इसमें आपको कोशिश करनी है एक्यूरेसी बहुत हाई रखनी है। और जो 40 सवाल है उसमें भी कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करके वहाँ पे एज लें आप। तो उस तरह से आप ये कर पाएंगे कि आप 60 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, आपका स्टेज 1 का स्कोर नॉर्मलाइज किया जाता है तो वो बाद में ऐड होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे स्टेज 2। द स्टेज 2 इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। इन दिस पेपर यू आर आस्क्ड अबाउट essay paper and then a pre-C paper. Now this paper requires a little practice, writing practice and a nuanced understanding of a variety of issues. आपको इसमें कोशिश क्या करनी है, आपको अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है। द स्टूडेंट्स दैट हैव बीन आस्किंग मी, आई ओनली रिकमेंड वन थिंग कि आप डेली एटलीस्ट एक पैराग्राफ लिखें, एक पेज लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें और वीकली एक फुल लेंथ टेस्ट लिखें। एक ऐसे फुल लेंथ हर हफ्ते आप जरूर लिखें, उससे और उसको इवेल्युएट करवाएं किसी से, उनसे असेसमेंट लें कि वेदर आई एम राइटिंग राइट और रॉन्ग, फिर उसमें फीडबैक लेके आप ग्रेजुअली इंप्रूव करें। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप टियर 1 क्लियर करने के बाद आप टियर 2 की तैयारी स्टार्ट करें। ऑल्दो ज़्यादा फोकस आपको टियर 1 पे रखना है अभी, लेकिन 20% फोकस आप टियर 2 पे भी दें, ताकि जब आपका एग्जाम क्लियर हो तो आपको ये ना लगे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि तब आपको 1-1.5 महीना ही टाइम मिलेगा। तो ऐसे के लिए आप बहुत सारा आपको एक नॉलेज चाहिए। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे मैंने पहले बता दिया, वो आपको अच्छा आना चाहिए। फिर नेशनल इश्यूज, जैसे यूक्रेन वॉर हो रहा है, गाजा पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इंडिया के और इंटरनेशनल इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजी क्या है, क्वाड क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप ऐसे में वो चीज़ ऐड करेंगे तो आपका ऐसे एक बहुत अच्छा निखर के आएगा। यू विल बी एबल टू इम्प्रेस द एग्जामिनर विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ इश्यूज। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है दैट इज प्री सी राइटिंग। सो प्री सी राइटिंग इज वेरी सिंपल। आपको जो पैराग्राफ दिया गया होगा उसको आप 1/3 रिड्यूस करना है। तो मैं क्या करता था मैं वो बताऊंगा, आपको ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। जस्ट ट्राई टू रिड्यूस 1 पैराग्राफ एट अ टाइम। आप 1 पैराग्राफ को कंसाइज करके 1/3 रिड्यूस करें, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को 1/3 में रिड्यूस करें, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को 1/3 में रिड्यूस करें। तो ओवरऑल इस तरह से आपका प्रीसी बन जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद अगर मैं बताऊं तो आप इसके लिए स्टेज 2 के लिए आपको एक तो असेसमेंट करनी है अपने राइटिंग स्किल की, दूसरा अपनी रीडिंग वाइड करनी है। यू हैव टू एक्सपैंड द एक्सटेंट ऑफ योर राइटिंग एंड रीडिंग एज वेल। आप मल्टीपल रिविजन्स और मल्टीपल सेशंस देंगे राइटिंग के, इवैल्यूएट कराएंगे उनको, तो you will be in a very good condition to attempt this paper and qualify. So coming to the final stage, which is an interview stage. तो interview में आपको क्या करना है? Interview, I always tell, interview cannot be prepared in 1 day, 2 day, 2 months, 3 months or whatever. But you can always fine tune your personality. Interview is the accumulation of your skills over your entire life. What you have done in your life, that will be reflected in the interview. All right. So I would suggest आप अपने बारे में जानें, अपनी हॉबीज को पहचानें, अपने इंटरेस्ट को पहचानें और एक बैलेंस्ड व्यू बनाएं चीज़ों के बारे में। रेडिकल ओपिनियंस आर नॉट वेलकम्ड इन एनी इंटरव्यू एंड सेम द केस इज विद इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटरव्यू। सो एक रेडिकल ओपिनियन से बचें, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव बनाएं। जो सोसाइटी में इश्यूज हो रहे हैं उन पे आपका क्या टेक है, आप क्या सोचते हैं, जो देश के मसलों को गंभीरता से सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, आपका एक आउटलुक क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है देश को लेके। सो वो चीज़ें आपकी इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होंगी। देखिए इंटरव्यू में यू कैन नॉट ब्लफ, यू कैन नॉट लाई, यू कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट बिकॉज यू विल बी कॉट। द पीपल हु आर टेकिंग योर इंटरव्यू will be very very senior IPS officers, so they have triple your experience and double your age, right? So you have to understand that, respect that and approach accordingly. So this is a little bit about the preparation strategy. Stage 1 और stage 2 के मार्क्स इकट्ठे करके आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। स्टेज 1 के मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाएंगे 100 मार्क्स, और वो 50 मार्क्स का स्टेज 2, दोनों को मिला के जिसके मार्क्स क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो स्टेज 1 है उसमें आपका मिनिमम कट ऑफ्स हैं हर कैटेगरी के लिए। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी को 100 में से मिनिमम 35 मार्क्स लाने ही हैं।
दूसरी दूसरी कैटेगरीज के भी सब सेक्शंस में उन्होंने बता रखा है कितने कितने मार्क्स चाहिए, तो वो आप नोटिफिकेशन से ज़रूर रेफर करें। तो इस तरह से अगर आप तीनों स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे, यू विल बी एबल टू गेट इनटू वन ऑफ द मोस्ट wonderful organizations in the country that serves the motherland and safeguards its borders. Finally, the main topic of today's discussion is the profile of the job. Many queries have come and people are curious कि join करने के बाद किस तरह का experience होगा हमारा. तो I will try to explain a little bit about the Intelligence Bureau, its functions, and how the training is done, and what are the challenges that you will be faced with. So first of all, Intelligence Bureau was founded in 1887 in the British era, and it used to safeguard India's internal security as well as external security. देखिए 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई, आफ्टर दैट द लॉस इन द वॉर forced or made the Indian defense advisors to contemplate, and they decided that now we need a dedicated external intelligence agency. तो 1968 में सर RN काउ की लीडरशिप में हमने RNAW की स्थापना की, and after that 1968 के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो हैज बीन टेकिंग केयर of India's internal security challenges. जब आपकी इसमें ट्रेनिंग होगी तो you will be trained in your physical aspects as well as your intelligence capabilities. तो आपकी 2.5 महीने की ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग. उसमें कुछ बच्चों ने पूछा है सर वेपन ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है, तो डेफिनेटली आपको वेपन ट्रेनिंग भी मिलेगी. आपका डेली शेड्यूल रहेगा, आप 5 बजे आपको उठा दिया जाएगा, आप ग्राउंड में जाएंगे, सबसे पहले आपकी ड्रिल होगी, पीटी होगी, उसके बाद आपकी ड्रिल होगी, उसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज होंगी, रोप क्लाइंबिंग होगी, आपकी फ्रंट रोल, बैक रोल, वो सब होगा आपका. I believe these 2 hours before breakfast are one of the most challenging and wonderful time of the day, because you enjoy it, you get refreshed, and you get ready to take the day on. After the initial couple of hours of exercises, you get ready for the classes and you have your breakfast. Classes start at 9:30. First session starts at 9:30 and ends at 12:31. After that you have lunch, and after a slight break 2:30 अगेन यू हैव वेपन ट्रेनिंग. इसमें आप सिर्फ वेपन ट्रेनिंग नहीं होगी आपकी, आपको वेपन एक डिसमेंटल करके उसको फिर से इकट्ठा करना भी, आपको एक कंपटीशन होता है उसका, आपको वेपन क्लीन करना भी सिखाया जाएगा. AK-47, ग्लॉक, आपकी 303, आपको सब ट्रेनिंग मिलेगी वहाँ पे. लेकिन आपको ये एक पार्ट है, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. उसके बाद शाम को आपके स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स के बाद फिर आपकी बाकी रूटीन है, और 7 बजे आपका फॉल इन होता है. उसके बाद आप डिनर करके यू रिटायर to your rooms, and after that same routine continues for the next 2.5 months. So ये physical training के बाद आपकी 2.5 months की इंटेलिजेंस ट्रेनिंग भी होती है जो दिल्ली में होती है. वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाएगा इंटेलिजेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ, किस तरह से आपको अपने आप को रुझान बनाना पड़ता है. आपको डिफरेंट एक लाइव सेशंस दिए जाएंगे, आपको एक भेजा जाएगा जगह जगह पे जहाँ पे आपको वो एक्सपोज किया जाएगा उन चैलेंजेस के साथ, ताकि आपको पता चल सके कि आगे कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं. तो यहाँ पे आपके साथ सीनियर IPS ऑफिसर्स भी ट्रेन करेंगे. आपको ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है. आपको पता चलेगा कि इंटेलिजेंस की दुनिया में क्या क्या होता है, विश्व के अलग अलग इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस की टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, किस तरह से क्या होता है वो आप जाएंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा. इसके बाद जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको भेजा जाएगा अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में. वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट के बाद आपकी 1 महीने की पुलिस ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे पुलिस के डिफरेंट विभागों के साथ आपको काम करने का अवसर मिलता है, जिसमें आपको ये ज़रूरी होता है क्योंकि आपको सिर्फ इसमें वेपन ट्रेनिंग या फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, आपको इसमें क्रिमिनल लॉज की नॉलेज चाहिए. आईपीसी में क्या क्या प्रोविजंस हैं, आपको फॉरेनर्स एक्ट में क्या प्रोविजन है, पासपोर्ट एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं, आपकी चार्जशीट कैसे फाइल की जाती है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी. और क्योंकि आपको बाद में डिफरेंट विभागों से काम करना पड़ेगा, तो ये आपकी ट्रेनिंग होती है. इसके बाद आपको एक कैडर अलॉट कर दिया जाएगा और वहाँ आप कैडर में जाके सर्व करेंगे. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आफ्टर द पुलिस ट्रेनिंग मेरी पोस्टिंग हुई थी नॉर्थ ईस्ट में. मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी नॉर्थ लखीमपुर में, जहाँ मैं 1 महीने तक काम किया. उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर सर थे, दे ही कॉल्ड मी टू तेजपुर एरिया वेयर ही वांटेड कि आई कैन डू मच बेटर देयर. तो वहाँ पे तेजपुर में आके मैंने सर्विस की, और मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 से 4 साल मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों में से हैं. वहाँ मुझे जो एक्सपीरियंस मेरे को वहाँ मिले, शायद ही किसी और जॉब में वो मिल पाते. मेरे को ये अवसर मिला, मैं आर्मी, एयरफोर्स, CISF, CRPF, BSF, SSB सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाइजन कैसे किया जाए, लीड इंटेलिजेंस एजेंसीज की मीटिंग्स अटेंड करने का अवसर मिला, एंटी हाईजैक स्किल सीखने का मौका मिला.
एयरपोर्ट सिक्योरिटी कैसे होती है उसका मौका मिला। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पे कि whenever you have to assess the redeployment of CISF at the airport, the signature of the intelligence bureau's assessment is must for that. So that was indeed, that shows the intelligence bureau the power of the pen wields, and not just security aspects. You have to deal with protests. For example, CA की protest हुई थी, तो I was active involved there. After that, in inland waterways, जैसे ब्रह्मपुत्रा में waterways में कुछ issue हो रहे हैं, वो भी onion prices are increasing. There you get it. You name it and there it is. Intelligence Bureau caters to every area of that time. अब एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। जैसे अभी आपने देखा यांगजे में चाइना ने इंकर्जन किया था तवांग सेक्टर में, आई वॉज पोस्टेड देयर, तो आई कैन टेल यू दैट having a first-hand experiences of such diverse challenges and such diverse opportunities शायद ही किसी और जॉब में मिलेंगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप यहाँ अनसंग हीरोज होंगे। आप यहाँ क्रेडिट नहीं लेना है आपको, और क्रेडिट लेना भी नहीं है, हमने देश की सेवा कर रही है। कहते हैं ना, जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो बहा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो देश प्रेम की भावना अगर आपके अंदर है, आप देश के लिए समर्पित हैं, तो ये सेवा आपको एक भरपूर अवसर मिलेगा कि आप देश की सेवा कर सकें। आपको पूरी इंडिया में कहीं भी जाने का अवसर मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जो एकदम गुमनामी से देश की सुरक्षा कर रही है। आपने पुलवामा में देखा, कुछ इंटेलिजेंस लैब्स हुआ, 26/11 में कुछ इंटेलिजेंस लैब्स हुआ। तो इससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि आपके कंधों पे कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आने वाली है। इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का एक काम होता है कि टाइमली इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेशन अगर लेट आ रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। इंफॉर्मेशन शुड बी टाइमली एंड करेक्ट। दैट इज द एसेंस। You will be the eyes and ears of the government. You will be the eyes and ears of the country. You will safeguard the borders of the country without even taking a gun. You don't need a gun. You need your pen. You need your mind. आपकी powers of the mind will be used. आप कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस आजकल आ रहे हैं। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं देश के ऊपर। ना सिर्फ जंग आजकल वहां पे लड़ी जा रही है जमीन पे, आजकल कंप्यूटर पे जंग लड़ी जा रही है। आपने देखा कैसे स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हाईजैक कर लिया था। इसी तरह से ये आपको एक थोड़ा सा एक अवेयरनेस अपने अंदर, एक टेक्निकल अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, ताकि आप एक सोल्जर जो होता है ना, सोल्जर इज ऑलवेज ऑलवेज रेडी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मोटो भी यही है, जागृत अहर्निशम, विच मीन्स ऑलवेज अलर्ट। सो यू हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट, not just after getting into the service, but even now while preparing. Be alert in your preparation, be alert as a person, and become an officer who is worthy of joining India's intelligence organization, Intelligence Bureau. At this note, I will just tell you one thing. आप इस वक्त आपको ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। आपको इस वक्त एक चीज़ के बारे में सोचना है कि आप अगले 2.5 महीने में तैयारी कैसे करेंगे, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको कितने टेस्ट लगाने हैं, आपको किस तरह से अप्रोच करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से निखारना है। और अगर मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपके अंदर देशभक्ति, देश सेवा का जज्बा है, तो मुझे नहीं लगता आपको दिन रात का भी कोई टाइम, आपको दिन रात भूल जाओगे। आप अपने आप को मंत्र मुग्ध कर दो, इस तैयारी में अपने आप को झोंक दो। कहते हैं ना, अगर आपको सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जितना जलो पहले, तो वो जलने के लिए तैयार रहो, आप पक्का चमकोगे। और देश को आप जैसे भावी कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, you are not just the aspirants, you are the proud young citizens of this great nation, and the nation needs you. So fasten your seat belts and get ready and prepare the hardest you can, because the harder you work, the luckier you get. And now is the time to make that opportunity yours. Grab this wonderful opportunity and get ready to serve the nation in the Intelligence Bureau. At this note, I take your leave. Thank you so much. Jai Hind.